नमस्कार, आपका फिर से एक बार स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। यू कैन सब्सक्राइब टू दिस चैनल बाय सर्चिंग अतुल ठाकुर बाय माय नेम एंड you will get some important discussions on current affairs and few of the empowering talks. What I would like to discuss with you is this corona incidents the world is dealing with. What we need to adopt, हम लोगों को क्या चीज़ें अडॉप्ट करनी है, फाइनेंशियल बिहेवियरल क्या क्या चेंजेस हमको लाने पड़ेंगे या फिर तैयार रहना पड़ेगा अभी के दौरान और पोस्ट कोरोना ऑल्सो। नाउ दोज हू आर इनटू बिजनेस जॉब्स या जो भी आप कर रहे हैं, कुछ टिप्स आपको मैं देना चाहूँगा विच इज़ आज से मैं चालू करूँगा लुकिंग एट करंट सिनेरियो. So if you feel that they are good for you, you must adopt them. But if you trust me, I'm following certain people, certain guidelines which are there on international channels, then Google and everywhere, and I'm trying to get the best for you. So I would like to give certain tips to you how to deal with the situation which is right now you are dealing with and post-corona. The first thing that we all must know that is world is not going to be the same after this corona crisis is over. So we must know that you must alter your financial habits right now. Whatever money you have, whatever sources you have, protect them first. जो भी पैसा आपके पास अभी है उसको प्रोटेक्ट कीजिए, उसको फिजूल खर्ची मत कीजिए, उसको जितना हो सके उतना आप संभल के खर्चा करें, बिकॉज मनी इज़ गोइंग टू बी, कैश इज़ गोइंग टू बी वेरी प्रीशियस this in this period also and after also. So look at your habits, money spending habits. वो अगर ऑल्टर करना ज़रूरी है तो ऑल्टर कीजिए, और जहाँ ज़रूरी नहीं है वहाँ एक रुपया भी खर्चा मत कीजिए. ओनली स्पेंड ऑन थिंग्स दैट यू रिक्वायर, बिकॉज world is after this corona effect you may need certain cash. Then suddenly if you are not earning money right now, don't try to invest into something that you don't know or something that is very risky just by listening to someone who comes to you and says that कि this is something better. अभी ये समय आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स पे, या फिर आपका सीए अगर है तो उसके साथ बात करते रहिए. डोंट डू एनीथिंग, डोंट बी इनटू एनीथिंग, एनी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन अनलेस यू आस्क योर सीए, या फिर आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछे बगैर कुछ भी मत कीजिए. इन्वेस्टमेंट भी कहीं करना है, इफ़ यू वांट टू डू एनीथिंग that may look lucrative right now, but go to the experts. These are financial advisors, then market leaders if you know them, and your CAs. Next thing is that don't get threatened by every news. उसके ऊपर भी threaten मत होने की ज़रूरत नहीं है. But you can really analyze and keep yourself update about what is happening. Keep an eye on what government is announcing day-to-day basis, and get detailed analysis of that what government is declaring every day, because that may have a long-term impact on what you are doing right now. Particularly if you are in business, be in communication with experts that how the scenario is going to be in that business tomorrow, because see, habits of people are going to change. People are not going to gather again in large masses. So if you are dealing with some business which includes gathering of people, you may have to rethink about how you are going to do the business. Then if you are into restaurant business or something like that, you will have to really think about that also, because hygiene standards are now, it will be a totally different, and people have different notions about that. So you'll have to rethink about that as well. Then if you are into some business which involves one-to-one coaching or directly training people, you will have to think about that also, particularly coaching classes and all that. You will have to think about what new techniques you can adopt, and this is the time to understand and learn all those techniques. Then if you are into some distribution systems, if you are into that, you will have to really look at new distribution techniques as well, because this crisis is
Even if this crisis is over, in lockdown period is over, but the world will take certain time to get back to the normal. उसको टाइम लगने वाला है. तो वो दौरान आपको आपका बिजनेस चलाने के लिए आपको, या फिर जो भी आप करते हो उसको कंटिन्यू रखने के लिए आपको न्यू टेक्निक्स अडॉप्ट करने पड़ेंगे, और वो सीखने का टाइम अभी है. सो कीप ऑन गैदरिंग लॉट ऑफ नॉलेज फ्रॉम गूगल. यूट्यूब पे भी काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, रादर देन गोइंग फॉर रेसिपीज एंड ऑल दैट यू कैन लर्न व्हेन द थिंग्स आर नॉर्मल ऑल्सो, बट दिस इज नॉट द टाइम टू लर्न ऑल रेसिपीज एंड ऑल दैट. Let people in your family do that, but if you are into business, you have to look at that as well. जिनके पास जिनका बहुत सारा मतलब मल्टीपल बिजनेस में है, यू बी इन कम्युनिकेशन विथ योर पार्टनर्स, बी इन कम्युनिकेशन विथ द बिजनेस एसोसिएट्स, एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन द पोस्ट कोरोना सिनेरियो राइट नाउ. what new techniques you need to learn, अभी उनके साथ बातचीत कीजिए. दिस इज द टाइम टू बी इन कम्युनिकेशन विथ ईच एंड एवरी पर्सन and get knowledge what new things can be done. So the things that I want to emphasize on is आपका फाइनेंस के ऊपर बहुत सारा कंट्रोल लाइए. bring lot of discipline in that right now. Don't invest into something that you are not sure about, or you are listening from someone who is not expert of that. Go to experts first. Third thing is that if you be ready for the change also. If you need to change your business, or if you need to change whatever you are doing, start looking at that right now. Start gathering knowledge about the change right now, and listen to government advisories, so that you can go to your financial advisors, experts, and keep on looking at what you can do new. मैं आपके साथ रोज इसी तरीके से पोस्ट कोरोना के बारे में शेयर करते रहूँगा, बिकॉज लॉट ऑफ वी विल डिस्कस अबाउट मेनी बिजनेसेस इन डिटेल, लाइक ट्रैवल्स के लिए क्या करना है, रेस्टोरेंट में क्या करना है, देन इफ़ यू आर हैविंग कोचिंग क्लास उसके लिए क्या करना है, इफ़ यू आर मैन्युफैक्चरर उसके लिए क्या करना है. विल गो इन टू द डिटेल्स ऑफ एवरीथिंग. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टूडेज वीडियो. कीप सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल. Please advise this to many people as you can. And thanks for spending time. Stay healthy, and remember that we are going to make this country proud by our actions after what we do after Corona. So be ready for that, and let's make this country entrepreneurial capital of the world by our actions. See you.